बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम यूनिट 18 जिसका नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, उसमें हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है, Imagine a world in which speed of light is only 50 meters per second. How would the everyday events appear to us? देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक ऐसी दुनिया तस्वर करें जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ 50 मीटर पर सेकेंड हो, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो हमको कैसे नज़र आएंगे। तो देखिए बच्चे, if the speed of light is reduced to 50 meters per second, then relativistic effects for material objects will appear to a speed lower than 50 meters per second. Reason है बच्चे, during the speed of light increasing the relativistic factor 1 minus v square by c square, या अगर हम इस तरह कहें कि while increasing the speed of light decreasing the relativistic factor, so therefore if we imagine the speed of light c 50 meters per second, then value of c must be greater than v. There would more effect on the mass length of an object moving with velocity of v. So moreover, there would be more effect on time dilation. The relativistic mass m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square. अगर हम इस फार्मूले में c की जगह v पुट करें तो हमारे पास बच्चे मास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ होगा L इज इक्वल टू एल नॉट मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर, या टाइम डायलेशन भी है। द इफेक्ट ऑन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज आल्सो ग्रेटर because the change in mass will be greater than it moves with a velocity v. So E is equal to del mc square, where del m approaches to infinity, तो E हमारे पास होगा infinity. So thus when c is equal to 50 meters per second, then the effect on everyday event will be greater as compared to present time. Second question है बच्चे कि some star are observed to be reddish and some are blue. Which stars have the higher surface temperature? Explain. तो इसमें अगर हम देखें, ये बच्चे डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो ब्लू का ज़्यादा होगा। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, द स्टार which observed to be blue will have high surface temperature. Those stars which are observed blue, they are high surface temperature. This is because blue light is a wavelength of 4861 angstrom and a red light wavelength is a 6563 angstrom. अब रेड लाइट की वजह जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है ब्लू से, तो फ्रिक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा होगी। And red light wavelength is a 6563 angstrom. Now, according to Wien Displacement Law, lambda is equal to constant multiply lambda is equal to constant 1 by t. So t is equal to constant divided by lambda, मतलब जहाँ पे वेवलेंथ कम है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 0.002898 मीटर केल्विन, wavelength of blue light 4861 angstrom and wavelength of red light 6563 angstrom. Now temperature of blue star हमारे पास बच्चे आ जाएगा 5967 केल्विन and red light हमारे पास होगा 4418.7 केल्विन। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो ब्लू लाइट की जो सरफेस टेम्परेचर है वो रेड लाइट के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। So this shows that temperature of a blue star is higher than the radius star. This is why
we use blue light for welding, then redder light. इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3. देखिए, if the photoelectric effects are observed for one metal, can you conclude that the effect will also be observed for another metal under the same condition? So now बच्चे देखिए, मेटल सरफेस चेंज करने से जो एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बच्चे वो डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे हमारे पास जो एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है. अगर हम मेटल सरफेस को चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत डिफरेंट होगी. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस अंडर द सेम कंडीशन. इसको बच्चे हम एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए, नाउ व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is observed for one metal under the influence of certain radiation cannot be generalized for an other metal because the ejection of electron from the metal surface depend upon its work function. When radiations of wavelength lambda are incident on a metal surface of work function pi, the photoelectric effect will take place only if the energy of incident photon is equal or greater than work function such that pi is equal to hf divided by c. So pi by c is equal to hf divided by c. Now we know that c is equal to f lambda, so lambda is equal to c by f. This implies that pi by c is equal to h by lambda. So lambda is equal to ch या hc divided by pi. So lambda is proportional to 1 by pi. Since different metal have different work function, so they will require the radiations of different wavelength in order to eject electron from this surface. इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4. ये भी बहुत पेपरों में आ चुका है कि does a light bulb at a temperature of 2500 Kelvin produce as a white light as the sun at a 6000 Kelvin. So now that is not possible for a light bulb at temperature 2500 Kelvin to produce as white light at sun at 6000 Kelvin. This is because the brightness of light depend upon the intensity of light, and sunlight at 6000 Kelvin is a greater intensity than the light bulb at 2500 Kelvin. Explanation from Stephen Boltzmann's law, the energy radiated per second per unit area of hot body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. So mathematically बच्चे हम लिख सकते हैं कि E is equal to sigma T की power 4. If the temperature rises, the intensity of emitted light also increases. So therefore, the sun produces more white light brightness at 6000 Kelvin as compared to the bulb at 2500 Kelvin. Question number 5 बच्चे ये भी important है. A beam of red light and a beam of blue light have exactly the same energy. Which light contains the greater number of photon? देखिए बच्चे, the light beam with a greater wavelength will contain greater number of photon. अब इसको हम explain करते हैं. देखो बच्चे, we know that energy of n number of photon is given by E is equal to nhf. अब यहाँ पे n is equal to E divided by hf. अब हम जानते हैं C is equal to f lambda, so f is equal to C by lambda. तो ये इक्वेशन बनेगा बच्चे n is equal to E lambda divided by hc. Now for same energy we have E divided by hc constant. So equation number 1, n is equal to constant lambda, so n is proportional to lambda. ये इक्वेशन शो करता है
the number of protons are directly proportional to wavelength of radiation. Now we know that the wavelength of red light is greater than that of blue light. So for same energy, the red light would contain more number of protons as compared to what a blue light. इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 को. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बच्चे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से कि बहुत इम्पॉर्टेंट अक्सर पेपरों में आ चुका है कि वाई मस्ट द रेस मास ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज अ ज़ीरो. देखिए बच्चे, द रेस मास ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, व्हेन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्चुअल मास m नॉट moves with high speed, then its apparent mass according to the result of special theory of relativity is given by m is equal to m naught divided by 1 minus v square by c square. अब हम जानते हैं कि a photon always travel with the speed of light, and if we replace v by c, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास मास क्या आ जाएगा? मास हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी इन्फिनिटी आ जाएगा. सो इफ द प्रोटॉन इज सेम रेस्ट मास, its relativistic mass and energy should be infinite. But proton does not possess infinite mass or energy, so therefore it is concluded that its rest mass must be equal to zero. ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ज़्यादातर पेपरों में आ चुका है कि वाई डोंट वी ऑब्जर्व कंपाउंड इफेक्ट विद विजिबल लाइट. देखो बच्चे, वी डोंट ऑब्जर्व कंपाउंड इफेक्ट विद विजिबल लाइट. द कंपाउंड इफेक्ट अकर if the minimum energy of proton is from 0.1 mega electron volt to 1 mega electron volt. If the energy of proton of visible light is less than 0.1 mega electron volt, so we cannot observe Compton effect with the visible light. For Compton effect, we usually use X-ray and gamma rays, which are more energetic. Radiation, the photon of X-ray or gamma rays transfer some of its energy to the electron, and with the remaining scattered in a certain direction. Question number 8. If an electron and proton have the same de Broglie wavelength, which is associated with a particle, which particle has a greater speed? देखिए, for same de Broglie wavelength, the speed of electron will be greater than the speed of proton. We know that the de Broglie wavelength is associated with a particle of mass m and velocity v is given by lambda is equal to h by mv. अब यहाँ पे अगर हम h और lambda को कॉमन करें तो स्पीड और मास के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा. तो ये इक्वेशन मुझे शो करेगा कि velocity of a particle is inversely proportional to the mass of the particle. If the mass of the particle is less than that of proton, so electron have greater speed than proton for same wavelength. Question number 9 है, an electron and proton are associated or accelerated from rest to the same potential difference. Which particle has the larger wavelength? The electron will have larger wavelength than a proton for same potential difference. देखिए बच्चे, we know that the de Broglie wavelength associated with a moving particle is given by lambda is equal to hp. We know that the momentum of a particle in term of potential difference is a potential work per unit charge. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वर्क की काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट क्यू. अब काइनेटिक एनर्जी बचे हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी नॉट क्यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एम, सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2v naught qm, so mv whole square 2v naught qm. अब हम जानते हैं p is equal to mv,
तो यहाँ से बच्चे हमारे पास रिलेशन आ गया P इज इक्वल टू 2V0 अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई 2QMV0 अंडर द रूट। अगर इसमें हम HQV0 कांस्टेंट रख के तो length is inversely proportional to the mass. So this equation shows that the wavelength is inversely proportional to the square root of the mass of charged particle. Greater the mass, smaller will be the wavelength. Now, mass of electron is less than mass of proton, so electron will have longer wavelength than the proton for same potential difference. के बाद उसे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपरों में आने वाला है, पेपरों में आ सकता है कि why ultraviolet radiation are harmful to skin while visible light is not. देखो जी, ultraviolet radiation are harmful to skin while visible light is not. हम जानते हैं बच्चे कि the energy of photon is given by E is equal to HF. यहाँ पे मतलब ये है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है. सो दिस इक्वेशन शोज दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. Greater the frequency of radiation, greater will be its energy. Now we know that the frequency of ultraviolet light is greater than the frequency of visible light. So ultraviolet radiations are more energetic and can penetrate very far in the body. So they can damage living cell and tissue. So they can cause various skin diseases, while visible light is less energetic due to their low frequency. They are safe as compared to ultraviolet radiation. So thank you, students.